अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस। आज हम देखेंगे कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है और इनकी फर्दर टाइप्स को भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज अ फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेज किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं। अब वो ग्रुप टू वर्ड्स का भी हो सकता है, टू से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। सो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज two words or more than two words. फ्रेजेस जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, जिसमें हमारे पास prepositional phrases, verb phrases, noun phrases, adverb phrases and adjective phrases आते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं prepositional phrase क्या होता है। prepositional phrase में because it is a prepositional phrase तो इसमें एक preposition होगा और कुछ words होंगे जो उस preposition के साथ उस preposition के साथ यूज हो रहे होंगे। Like along the way, along the way में along is the preposition, so the way is added. The way add करने से turned into a group of words, so along the way is a prepositional phrase. Second is verb phrase. Verb phrase, क्योंकि ये verb phrase है, it means it will have a verb and some other words. It can be one word और एक word से ज़्यादा भी हो सकते हैं। Have been meeting, in इस sentence में there are three verbs together. Have been helping verbs and meeting जो है it is your main verb. So it means it is a combination of three verbs. So इसीलिए इसको हम verb phrase कह रहे हैं. Next is big brown cat. Noun phrase. It means it must have a noun. इस एग्जाम्पल में cat जो है it is a noun और जो दो words cat को describe कर रहे हैं that are big and brown. So big brown cat is a noun phrase. Adverb phrase. Adverb phrase means it must have an adverb. So extremely slowly में slowly आपका adverb है और extremely slowly is the adverb phrase. And adjective phrase. Adjective phrase में there you need an adjective. Adjective is small here and quite small. दोनों मिला के जो है it turned into a phrase. Adjective phrase. एक चीज जो आप इन सारी एग्जांपल्स में नोटिस करें वो ये है कि इन सारी एग्जांपल्स में अलोंग द वे हैव बीन मीटिंग में एक्सेट्रा में देयर इज नो सब्जेक्ट एंड देयर इज नो वर्ब। यही फ्रेज की डेफिनेशन थी। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सो फ्रेज जो है इट विल जस्ट बी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। मूविंग ऑन टू क्लॉज। क्लॉज is a group of two or more words with a subject and a verb. Clause phrase की तरह group of words ही होता है। अगेन ये ग्रुप भी दो या दो ज्यादा वर्ड्स का हो सकता है, लेकिन जो क्लॉज और फ्रेज में जो चीज दोनों को डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि क्लॉज में वी हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जबकि फ्रेज में हमारे पास सब्जेक्ट भी नहीं होता है और वर्ब भी नहीं है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वेंट फॉर अ वॉक। Here, I is the subject, went for a walk. This went is the verb, and I went for a walk is a whole clause. I mixed the two colors. I subject हो गया, mixed verb हो गया, and I mixed the two colors is a clause. Types of clauses. जिस तरह phrases different तरह के हैं, so clauses की भी different types होती हैं। जो दो types आज हम discuss करेंगे, that is the independent clause and the dependent clause. Let us see first what is an independent clause. Independent clause is a subject and an object and expresses a complete thought. Independent clause में आपके पास subject भी होता है, object भी होता है, और independent clause को पढ़ के we will get a complete meaning of the clause. आपको clause को पढ़ के उसका meaning समझ आ जाएगा। और अगर आपके sentence में independent clause एक से ज़्यादा है तो what are we going to do? It is, if there is more than one independent clause, it is joined by a coordinating conjunction. Sentence है, sentence बड़ा भी हो सकते हैं, उसमें एक से ज़्यादा independent clauses भी हो सकते हैं। जब आपका clause एक से ज़्यादा हो, independent clause एक से ज़्यादा हो, तो उन दोनों को connect करने के लिए we use a coordinating conjunction. Coordinating conjunctions include and, but, so, or, nor, for, yet, either, also, ever, only, and hence. Examples.
I want to be present there, but I don't have a transport. I want to be present there. It is a complete clause. It is a complete independent clause. I don't have a transport. ये दूसरा आपके पास independent clause है. दो independent clauses हैं. I want to be present here. I don't have a transport. दोनों को join करने के लिए coordinating conjunction is used. He was sleeping, so he didn't hear what you said. He was sleeping, an independent clause. He didn't hear what you said. This is another independent clause. दोनों को जो चीज कनेक्ट कर रही है that is the coordinating conjunction. So then it is the dependent clause. Dependent clause independent clause की तरह इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, बट डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट गिव अ कंप्लीट थॉट. इट मीन्स कि डिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ के आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा उस क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट होने के लिए यू नीड अनदर क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जिस क्लॉज की जरूरत होती है दैट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो अ डिपेंडेंट क्लॉज नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द मीनिंग. Dependent clause is also called the subordinate clause. इसको subordinate clause इसलिए कहते हैं because it can begin with the subordinating conjunction. It means आपका dependent clause है वो subordinating conjunction से start हो सकता है जिसमें हमारे पास आते हैं because, that, while, unless, though, although, as, if and since. Or it can also begin with a relative pronoun. Relative pronouns include who, whose, whom, which or that. Or it can also begin with how or other WH words like where, when, etc. Examples: if you behave well, you will go. इस सेंटेंस में you will go, this is a complete clause. ये independent clause है. जबकि आप दूसरे clause को देखें, if you behave well, this is a dependent clause because it is starting with a subordinating conjunction if. और अगर आप if you behave well को अकेला पढ़ें तो it won't make any sense. If you behave well what it does, इसका meaning complete नहीं होता. इसका meaning complete होने के लिए we need another clause that is you will go, which is the independent clause. So इस sentence में if you behave well, this is the dependent clause. Second, he is sleeping because he is tired. इस सेंटेंस में भी because he is tired, this is the dependent clause because ये subordinating conjunction because से start हो रहा है. और because he is tired इसको अगर आप अलग से पढ़ें तो it doesn't make any sense. इसका meaning complete करने के लिए we need another clause that is he is sleeping. I met my friend while I was traveling. While I was traveling is the dependent clause. I met my friend is the independent clause. In the end, let us see some practice sentences. What you have to do, you have to identify the underlined part as a phrase or a clause and mention the type. आपके सामने sentences given है, उसमें कुछ parts underline है. आपने ये बताना है कि वो phrase है या clause है और साथ साथ आपने ये भी बताना है कि उनकी type क्या है. Sentences देखते हैं. You can pause the video here and write the sentences somewhere or write the answer somewhere. These are the answers.